Good morning, children. How are you? I hope you will be better. I know that you are better, and you should also want to know that how I am. Na? I am also feeling well. Okay. Today I want to give you a moral that is, arise, awake, and stop not till the goal is reached. The meaning of this is that उठो, जागो और तब तक मेहनत करते रहो जब तक कि आपको अपना गोल, अपना एम जो आपने डिसाइड किया है वो आपको अचीव ना हो जाए। और आपके एम को डिसाइडेड एम को अचीव करने के लिए जो भी आपको करना पड़े, जो भी मेहनत करनी पड़े, आप उसे करते रहो, निरंतर मेहनत करते रहो। जैसा कि आपको पता है, एज यू नो दैट आई एम टीच टू यू मैथ्स एंड इन दिस डेज आई एम टेकिंग अ रिविजन क्लास from your previous book, and my given homework you will done in the at this time you will done in rough copy, and if you want then you can do in previous copy. If this copy have any page then you can do in the previous math copy, otherwise you can do in the rough copy. But from the 15th of May you will do my given homework in the fair copy. From the 15th of May till the 15th May you have to purchase at any cost. You have to purchase your books and copies and all given homework to complete in the fair copy. Okay? All the teachers that will give in the work, you have to complete all work in fair copy. All subjects, not only mine. Okay? As you know that today I am taking your revision class, so I will take I will take the revision of your first chapter, that is large numbers. Large numbers. आपको पता है, जब भी you know that when we read about the large numbers, we have to know about the Indian system and international system. We will write the large numbers in two methods. One is Indian system, and second is international system. Indian system, you know that how we will write the numbers by the Indian system method. We can write any number to the Indian system. How? That we have a number 1700345. You know that in Indian system we have a chart. O for ones, T for tens, H for 100, TH for 1000, TTH for 10,000. Then lakh, L for lakh, and TL that is 10 lakh. C stands for crore. TC stands for 10 crore. In the Indian system, we have a chart. In the international system, we have a chart. Ones, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000, HTH, 100,000, million, 10 million,
of groups is known as the ones. It is a ones period. It is a hundreds period. 100, 1000. It is a 100 period. HUNDRED, 100 period. And it is a millions period. MILLIO, and it is a millions period. This is the difference between Indian system and international system. When we write any number to the Indian and international system, then we have two difference. What is the difference between? We see that when we write the numbers by the Indian system method, then we have ones, tens, hundred only. This will is a one pair, means जब हम वन टेंस हंड्रेड में राइट करेंगे तो पहले वन टेंस हंड्रेड के बाद हमारा वन कॉमा आएगा. दिस इज द थाउजेंड्स पीरियड. तो वन एंड टू डिजिट के बाद फिर हमारा नेक्स्ट कॉमा. दिस इज द लाख पीरियड. इट इज अ वंस पीरियड, वंस, थाउजेंड्स पीरियड, and it is a lakhs period. It is a crores period. Okay, here you will see that ones, tens, hundred, it is a ones period. It is three pair of the number is a thousand period, and it is a millions period. And you also know that what period is come after the million in the international system. Yes, you are right. The billion income, the billion is come the period of the period after the million. And what is the comes? What period is come after the billion? Billion after the trillion. You know, you have learned that I teach that in the previous class very well, and you will learn it. Now I want to give you one example of this. If you have 1 7 4 5 3 8 7, then if you will write this number by the method of Indian system, then the first comma will be ones, tens, hundred, means 3 digit. Ones, tens, hundred. After the 3 digit, the first comma will come, and after the 3 digit, the thousands period is started. So the next comma will become 1 2 digit, that is 1000 and 10,000. After the 10,000, the next comma is come. Okay, the next comma will become after the 2 digit, because lakh, 10 lakh. So lakh and 10 lakh. And if you have any number, then you can put the next comma after the 2 digit. This is right. This is right by the Indian system. But if you will write these number by the international system, that is 1745 If you will write this by international system, then how will you write this? First comma will be 1 2 3 digit. Then the first comma is 1 2 3 digit. After the 3 digit, first comma is come. Next comma 1 2 3. Next comma भी 3 digit के बाद ही आ रहा है, तो 1 2 3 digit के बाद next comma. एंड ये जो हमारा पीरियड है, ये कौन सा पीरियड है? ये 1000 का पीरियड है. ये कौन सा पीरियड है? वंस का पीरियड है. यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कौन सा पीरियड है? मिलियन का. तो सो द नंबर विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द 1 million, मीन्स इट विल बी राइट 1 million 700 1,745 and 387. It can be right by the international system. But if you will write this number is to the Indian system, then it will write how? Ones, tens, hundred is a ones period, then 1000, ones, 1000, 10,000 is a thousands period. Then lakh, 10 lakh is a lakhs period. Means it will be start 17,45,387
187. Okay, understood? I hope you will be understood because I teach to you already. Okay, so now it is your homework for you, and you have to complete in the copy, in your rough copy. If you have any copy, means this is you have to complete in the copy. Okay. Your first chapter is complete, and one thing is remain your first chapter, that is the greatest number and smallest number. You know that the greatest in this chapter, that is greatest number and smallest number. Then you know that the greatest number, the greatest two-digit number is 99, and smallest two-digit number is 10. Greatest three-digit number is 999. Smallest three-digit number is 100. Okay. The greatest number and smallest number, you will write it. You can write very easily. It is the smallest number. Now your next exercise. This is the successor and predecessor. You know that how is find to the successor and predecessor. If you have find to the successor, of any number, then successor equals to number plus 1. ठीक है. अगर आपको किसी भी नंबर का सक्सीजर फाइंड करना है तो आप उस नंबर में क्या करोगे, उसकी यूनिट प्लेस पे 1 ऐड कर दोगे. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे ही देती हूँ. सपोज दैट यू हैव 215. इफ यू वांट टू फाइंड द सक्सीजर ऑफ 215, 7215, then you will add plus 1 only the unit place, then it will come 7216. It is a successor of 7215. Okay. And if you will find the predecessor of this, then you will do the -1 in this. So now the successor and predecessor is also homework for you. Now I will revise to you Roman number. Roman numerals. How to write the Roman numerals? There are some rules of Roman numerals. If we know the Roman numerals, we can write many of the Roman numerals. Okay. The first Roman numeral is, we have to some symbols of Roman numeral. In the Roman numeral, 1 is right by the I. I means 1. V stands for 5. Yeah, 5 means V. Okay. Then X is the written as 10. Then L for 50. Now C for 100. And LC. Now D for 500. Then M for 1000. आपको पता है इन्हीं नंबरों से मिला करके हम कोई भी नंबर बना सकते हैं. कैसे? हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं. क्या रूल होते हैं? वो रूल ये होता है कि अगर हम किसी बड़े नंबर से, जैसे 1 and I and V, if you compare to I and V, then you will see that V is greater number to as compared to the I. So the which number is greater? V. If you will write any number to the, means अगर आप दो नंबरों के कंपेयर में किसी भी नंबर के जो ग्रेटर नंबर होगा उसके आप राइट में कोई नंबर लिखोगे तो वो प्लस में माना जाता है, एंड लेफ्ट में लिखते हैं तो माइनस में. सपोज दैट ये है V के राइट में मैंने क्या लिख दिया? I. ठीक है. V के राइट में लिख दिया हमने I, तो V एंड I. ठीक. V मीन्स 5 और राइट में लिखा है तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? +1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 6. ओके.
अगर इसी v की बात करो तो v के कंपेयर में जब आप i आपको पता है छोटा है, जब लेफ्ट में लिख देते हो तो 5 - 1 हो जाता है। 5 - 1 इक्वल्स टू क्या होगा? 4। ओके, अंडरस्टूड। ऐसे हम बात करें 30 की तो आपको पता है ये आपका x है, ठीक। अब x के बाद हम लिख सकते हैं v, ठीक है। v अगर ये x बड़ा है इसके इस साइड लिखा गया, राइट साइड लिखा गया, तो राइट मतलब इसका प्लस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका 15। हम 30 की बात करते हैं तो x मीन्स 10 + 10 + 10 इक्वल्स टू किसके हो गया? 30 के। बट हु विल टेल दैट हाउ टू विल राइट द 40? कैन 40 is written to as the 4 times x? Can it is written? No. Why? Yes, you know the answer, because it is not rule to the write x is 4 times. Okay? Roman numerals में x को 4 times लिखने का कोई भी रूल नहीं है, इसलिए x को 4 times नहीं लिखा जाता। तो हम 40 कैसे लिखेंगे? हमारे पास क्या है? एक सिंबल L है ना, हम L की हेल्प से 40 लिखेंगे। L है हमारे पास, L मीन्स क्या होता है? 50। अब बताओ 50 में ऐसा क्या कर दिया जाए कि हमें 40 अचीव हो जाए? आपको पता है अगर 50 में हम प्लस करेंगे तो वो ज़्यादा होगा, तो हम इसका मतलब है उसमें कुछ ना कुछ लेस ही करेंगे। आपको पता है लेस करने के लिए वो सिंबल किधर लिखा जाएगा? यस, राइट में ना लिख करके हम किधर लिखेंगे? लेफ्ट में। लेफ्ट में लिखा गया XL। XL का मतलब हमने L में क्या किया है? XL लिखा है ना हमने। XL का मतलब XL क्या लिखा हमने? XL। XL का मतलब हमने क्या किया? 50 में 40 को, सॉरी 50 में 10 है, ये 10 है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 10। 50 में 10 को लेस करेंगे तो हमें अचीव क्या होगा? 40। दैट इज द 40 इज रिटन एज अ रोमन नंबर इज XL. So you will understood the how to write as a Roman numeral. So you have the homework is Roman numeral also. Okay, now you will complete the Roman numeral exercise in your copy. The chapter 1 is homework for you. The next chapter is addition and subtraction, so you will done in the homework. Addition and subtraction, I think you can do it, so you will done in homework. And the next exercise is multiply and divide. So the chapter number 2 is also homework for you. Okay, so the chapter 1 and chapter 2 is homework for you. You have to complete is this in your copy. Okay, thank you. And आपको याद है ना मैंने आपको क्या क्या कहा था कि आपको किसी भी हाल में you have to purchase till the 15th of May the new book set. आपको कॉपी बुक सेट खरीदना है, एंड ये कॉपी परेशानी है, जितना मैं होमवर्क दूंगी आपको कंप्लीट करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। ओके, थैंक यू।